अभी मन सबका शांत हो गया। अभी हम लोग प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे प्रश्न कहे थे। आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग बधाई देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। તમને બધાને અભિનંદન દઉં છું। બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન્સ હેવ કમ। એટલા સરસ પ્રશ્નો આવ્યા છે અને સૌથી વધારે મને એટલા માટે મજા પડી, आई ज्यादा मुझको अच्छा इसलिए लगा कि आप लोगों ने अपनी खुद की समस्या, जो मन की समस्या, वो इसमें रखा है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको मेरे पर कॉन्फिडेंस है। नहीं तो अपने मन की बात कोई बताता नहीं है, पर आप लोगों ने इसमें बताया है, बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत सारे थे, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। फिर भी मैं जिस प्रकार से उत्तर दूंगा उसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चाहे मैं ना प्रश्न नहीं पूछूंगा, पर इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखना, इस प्रकार से मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई देने का प्रयत्न करूंगा। व्हाट इज द मेथड टू लिव पीसफुल लाइफ? जीवन में शांति कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रहना, कैसे मन में शांति मिले? तो इसके लिए तुमको शाम को आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न सभी का है, सभी को शांति चाहिए। मुझे आज भी एक भी आदमी नहीं मिला जो मुझे बोले मुझे शांति नहीं चाहिए। और थोड़ी थोड़ी अशांति सभी को है, सभी लोग को थोड़ा थोड़ा टेंशन है, किसी को ज्यादा किसी को कम, सबको टेंशन है। ये टेंशन का युग आ गया। इतनी छोटी बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, बोले बहुत टेंशन हुए। तुमको क्या का टेंशन? तो बोलती है कि नहीं, मैं अभी तो सीनियर केजी में हूँ, पिछले समय जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी। मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, इसलिए बहुत टेंशन में। तो इतना कंपटीशन का भाव बढ़ गया, तो सभी लोग टेंशन में हैं। तो टेंशन का युग है। इसीलिए आज शाम को 6:30 बजे तुम लोग यहीं पर आना, अकेले नहीं आना है। दादा दादी, मम्मी पापा, जो भी घर में भाई बहन, सबको लेकर के आना, अपने फ्रेंड लोगों को लेकर के आना, सबको लेकर के आना। तो मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा, दैनंदिन जीवन में शांति कैसे मिलेगी, मन में शांति कैसे मिलेगी। सब्जेक्ट है आधुनिक मानव शांति की खोज में। तो उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूं, इसलिए शाम को जरूर आना, उसमें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। मेरे दिन के 12 घंटे स्कूल में और ट्यूशन में चले जाते हैं। बाकी के समय में पढ़ने की रीत बताएं। ध्यान के लिए टाइम कैसे निकालूं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां तुमको टाइम मैनेजमेंट की सीडी मिलेगी, उसमें मैंने A to Z ऑफ टाइम मैनेजमेंट बता दिया। A to Z ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो वो अभी उतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा। शॉर्ट में याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट के लिए याद रखना कि एवरीबडी, प्रत्येक मनुष्य के अकाउंट में रोज सुबह 86,400 सेकंड जमा होते हैं। किसी को कम मिल रहा है बोलना, 24 घंटा सबको मिलता है, किसी को कम मिलता है, सबको 24 घंटा मिलता है। गांधी जी को 24 घंटा मिलता था, स्वामी विवेकानंद को 24 घंटा मिलता था, किरण बेदी को उतना ही मिलता है। परंतु उसमें से वो लोग इतना समय निकाल लेते हैं और हम लोग को समय नहीं मिलता, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 86,400 seconds are deposited in everybody's account in the morning. उसमें से जितना सेकंड का सदुपयोग किया उतना तुम्हारा, नहीं सदुपयोग किया तो वो चला जाता है। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ वेस्ट, चला जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड, ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड। 86,400 सेकंड्स, एक एक सेकंड का सदुपयोग करोगे तो जरूर से तुमको टाइम मिलेगा। तो उसमें से तुम लोग बोल रहे हो कि हमको 86,400 सेकेंड्स में हमारा इतना सारा टाइम चला जाता है पढ़ाई में, ट्यूशन में, खाने पीने में, सोने में, टीवी देखने में, सबके लिए टाइम मिलता है।
खाने का टाइम मिलता है, सोने का टाइम मिलता है, टीवी देखने का टाइम मिलता है, और गपशप करने का टाइम मिलता है, गॉसिपिंग का टाइम मिलता है, पर ध्यान का टाइम नहीं मिलता, प्रार्थना का टाइम नहीं मिलता, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ये बकवास है। ये तुमने सुना होगा, एक कहावत सुनी है, वेयर देयर इज ए विल, यदि तुम्हारी मन हो तो माळवे जवाय, અને મન ન હોય તો ક્યાંય ન જવાય. If you decide I want to do, you can do it. That means 86,400 seconds, એમાંથી થોડીક સેકન્ડ તમારે આના માટે નીકળવી પડે. તો મને ખબર છે, I know कि आप लोग के पास समय कम है. अच्छा, can you give 1% of your time? 1%? Can you give? How many of you can give 1% of your time to me? 1% मेरे को टाइम की भिक्षा चाहिए. 50-50 की पार्टनरशिप नहीं है. 99% टाइम तुम्हारा, ओनली 1% मिला. 90% कम और 1% मारो. 8% नहीं हो, ओनली 1%. 1%, 1%. ओके, वेरी गुड. अब 1% टाइम का मतलब क्या होता है? 86,400 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? 864 सेकेंड. माने 14.5 मिनट हुआ, पूरा 15 मिनट नहीं हुआ. तो 14.5 मिनट में क्या करना? रोज सुबह उठने के बाद 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान. रात को सोते समय 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान. कितना मिनट गया? और सुबह 5 मिनट अच्छी किताब पढ़ना, स्वामी विवेकानंद की किताब भी अच्छी किताब पढ़ना. रात को सोते समय 5 मिनट अच्छी किताब पढ़ना. 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को. टोटल कितना मिनट गया? 14 मिनट चला गया. कितना बचा? आधा मिनट बचा. आधा मिनट क्या करोगे? आधे मिनट के लिए सीआईडी ऑफिसर बन जाओ. क्योंकि मैं तो देखने आऊंगा नहीं. तुमने कितना टाइम दिया? रोज रात को तुम लोग डायरी में लिखना. एक डायरी मेंटेन करो. डायरी नहीं हो तो आज ही यहाँ पर डायरी ले लेना. यहाँ डायरी मिलती है, विवेक डायरी. तो आज ही तुम लिखना, आज से लिखना शुरू करो. आज सारे दिन में 14.5 मिनट की भिक्षा स्वामी जी को दिया कि नहीं? 1 मिनट प्रार्थना किया कि नहीं? 1 मिनट ध्यान किया कि नहीं? 5 मिनट स्वामी जी की किताब सुबह पढ़ा कि नहीं? एकाग्रतापूर्वक पढ़ाई की कि नहीं? अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आधा मिनट. इस प्रकार से 14.5 मिनट की भिक्षा यदि दोगे तो देखोगे, you will get, surely you will get success, surely you will get happiness, surely you will get peace of mind. तो आज से शुरू कर दो. आज से, कल से शुरू करोगे? आज से. आज एक टाइम टेबल बनाना, उसमें 14.5 मिनट का ये तुमको जो टाइम मिला है वो देना. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ टू मैनेज टाइम, A to Z टाइम मैनेजमेंट का जो किताब, उसमें तुमको जो CD है उसमें सब मिलेगा. बट आई एम गिविंग यू सम फॉर्मूलाज. ट्राई टू कंबाइन एक्टिविटीज, एनालाइज योर एक्टिविटीज, हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग. बहुत सारे लड़के लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी वेस्टेज करते हैं. अब मान लो पीरियड में टीचर नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? गपशप करते हो. व्हाई नॉट? यू स्टडी. अच्छा, ट्रैवलिंग करते हो. ट्रैवलिंग में क्या करते हो? गपशप करते हो. उस समय थोड़ा सा हाथ में किताब रखो. ट्रैवलिंग के समय किताब पढ़ो, या कुछ गीत सीख लो, या कुछ स्तोत्र सीख लो, श्लोक सीख लो. रोज एक एक गीता का श्लोक सुनो, सीख लो या याद कर लो जब तुम ट्रैवल कर रहे हो. लाइकवाइज देयर आर मेनी वेज of utilizing your time. If you utilize your time properly, don't waste it, then you will get lot of time for lot of activities. So all these techniques I have told, A to Z of time management के CD में तुमको सब मिल जाएगा. Now very good question. Is honesty always the best policy? No, sometimes it is a bad policy. We should be dishonest. What do you say? Is honesty the best policy? Yes or no? Yes. How many say yes? Is honesty the best policy? How many say yes? हाथ ऊंचा करो. Honesty. Be honest. Tell me honestly, do you think that honesty is the best policy? How many of you? Please raise your hand. So now, many are not raising their hands. That means you think that dishonesty is the best policy. Isn't it? Honesty is not the best policy. What is the best policy? Dishonesty. स्वामी जी वो आपकी बात रख दो. सत्यमेव जयते. अरे वो तो पुराना मंत्र हो गया. नया मंत्र है असत्यमेव जयते.
जितना आस्था का पालन करोगे जल्दी रुपया आएगा। टेबल के नीचे से रुपया लो, अरे बाबा रे, इतना बढ़िया कार तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये हम लोग सोचते हैं भ्रष्टाचार करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ईमानदारी से रहेंगे, आजकल के जमाना ईमानदारी का जमाना नहीं रहा स्वामी जी, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब तो जो जितना बेईमानी करेगा जितना जल्दी, उतना जल्दी उसका कैरियर डेवलप हो जाएगा। आप बेईमानी करके परीक्षा में पास हो सकते हैं, बेईमानी करके इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, बेईमानी करके नौकरी भी मिल सकती है, पर जब काम करना होगा उसमें तुमको बेईमानी नहीं चलेगा, तुरंत उसके बाद में निकाल देंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि तुम कैसे भी करोगे काम तुमको रहेगा। हायर एंड फायर, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश। एक नया जमाना आ रहा है कि जहां पर आप लोग यदि सक्सेसफुल होना है तो एफिशिएंट होना पड़ेगा। एफिशिएंट कब होगे? जब ऑनेस्टली यू विल वर्क। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, इसीलिए मैंने एक लेक्चर दिया था वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, उसकी सीडी तुमको यहां मिलेगी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में। कि लोगों को वैल्यूज की वैल्यूज पता नहीं है, वो सोचते हैं अरे क्या होगा भाई सच बोल करके। जो लोग सच बोलते हैं, जो ईमानदार है, वो लोग तो सफरिंग कर रहे हैं, और जो बेईमान है वो अपना मजा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम डिसऑनेस्ट बने। इस प्रकार के प्रश्न आज कई युवकों के मन में है, because they do not know that law of karma is supreme in the mental world just as law of gravity is supreme in the physical world. These are all lighthouse principles. कोई कहता हम तो कर्म के सिद्धांत में मानते ही नहीं है, अभी तो कर्म सिद्धांत में मानता જ નથી। પછી હું કહું છું તમે માનો કે ન માનો, કર્મ સિદ્ધાંત પોતાનું કામ કરશે જ કરશે। ન માનો કે ન માનો, because they are lighthouse principles. अच्छा जाओ भरूच में कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, जाओ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाओ, छत पर चढ़ के बोलो मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं करके जंप करो, क्या होगा? क्या होगा? दूसरे दिन समाचार पत्र में तुम्हारा फोटो आएगा, ये गुरुत्वाकर्षण नियम में नहीं मानते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, फिर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने काम किया और खत्म। इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत कहता है अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। आज यदि तुम डिसऑनेस्टी करते हो सकता है कि कल तुमको अच्छा फल मिले, और अंत में विजय किसकी होगी? जो ऑनेस्ट है। पांडव और कौरव का युद्ध हुआ, अंत में कौन जीता? पांडव। क्यों? सत्यमेव जयते। ये हमेशा याद रखना है। अभी कौन मेरे साथ कौन वोट करेगा? सत्यमेव जयते कि असत्यमेव जयते? हाथ ऊंचा करो जो लोग ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी देखो हाथ बहुत अच्छा कर, वेरी गुड। चलो अब मैं ताली बजाता हूं। Now there is a beautiful question. My parents want to see me as doctor in future, but I don't know what I want to do. My question is whether I should listen to myself or complete my parents' dream. Now, first of all, you complete your education, number 1, and get good marks in the examination, number 2. Number 3, during vacation we will think it over, what is your thing. Now it is too early. But at present, what you should do, try to concentrate on your study. अर्जुन को क्या दिखता था? पक्षी की आंख या पक्षी? तो इसी प्रकार से now you concentrate on your study. After your study is complete, you get maximum try marks. Then we will think whether you should become a doctor or not. But what you should try to do, I tell the parents, don't pressurize your students. If somebody wants to become an astronaut, somebody wants to become an air hostess, somebody wants to become something else, let them be given that freedom. But many people do not know what exactly should be their profession. So it is better to talk to your parents, take your independent decision. सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबकी, करो मन की। पर सुनना चाहिए, पहले सबका सुन करके you try to analyze what is your own attitude of life, उसके अनुसार अपना कैरियर डेवलप करो। What should be done to get rid of some bad habits like smoking, drinking, etc.? Lots of
that have been done to make opposite person stop doing so, but that all did not work. Help. Okay. Now the thing is this: if you want to give up a bad habit, you must cultivate a good habit. Then only you will be able to give up the bad habit. So what you should try to do is, you should try little by little. Start with the minimum, practice the easiest. Write down the formula. Write down the formula, success formula. Start with the minimum and practice the easiest. Start with the minimum and practice the easiest. सरल से सरल बात से बात शुरू करो और कम से कम से शुरू करो. पहले ही दिन से तुम बोलोगे कि नहीं मैं एकदम बंद कर दूंगा तो नहीं होगा. अभी मान लो तुम 4 बार चॉकलेट खाते हो, बोलना कल से मैं केवल 3 बार चॉकलेट खाऊंगा, है ना? 3 बार, वो तो ठीक है. फिर 1 महीने बाद केवल 2 चॉकलेट पर डे. ऐसा करके धीरे धीरे हमको कम करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा. और साथ साथ में प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे भगवान मेरा संकल्प सिद्ध करने के लिए मुझे मदद कीजिए. इससे धीरे धीरे तुम देखोगे सक्सेसफुल हो जाओगे. सो स्टार्ट गुड प्रेयर, स्टार्ट गुड हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स. बैड हैबिट्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड. रामकृष्ण देव के शिष्य थे गिरीश चंद्र घोष. गिरीश चंद्र घोष इतना शराब पीते थे, बोलते एक के ऊपर एक बोतल चढ़ाओ तो माउंट कैलाश से ऊपर चली जाएगी, ऐसा बोलते थे. बोले मैंने इतना शराब पिया है, एक के ऊपर एक बोतल लगाओ तो माउंट कैलाश से ऊपर चली जाएगी. इतना शराब पीते थे. परंतु रामकृष्ण ने कभी उनको नहीं कहा तुम शराब पीना बंद करो. उन्होंने ये कहा कि माँ को, जगदम्बा को ऑफर करके शराब पीना. तो माँ के नाम से उनको फिर इतना नशा आ गया, माँ के नाम से, जगदम्बा के, भगवान के नाम में इतना आनंद आ गया कि वो शराब का नशा पूरा छूट गया, नया नशा लगा दिया. श्री रामकृष्ण ने दूसरा नशा लगाया. काय का नशा? भगवान के नाम का नशा. तो ये नशा अपने आप छूट गया. तो डेवलप ए गुड हैबिट, positive habit, the negative habit will go of itself. Is it necessary to speak truth every time, or can we let lie at times be justified? तो प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमको सब समय सच बोलना चाहिए ना कभी कभी झूठ बोल सकते हैं. तुम लोग क्या कहते हो? कभी कभी झूठ बोलना अच्छा है? झूठ बोलना अच्छा है कि सच बोलना अच्छा है? अच्छा, कितने लोग बोलते सच बोलना अच्छा है? हाथ ऊंचा करो. अच्छा ठीक है. कितने लोग बोलते झूठ बोलना अच्छा है? झूठ बोले कौवा काटे. ये देखो सब झूठ बोलने वाले. अभी ये जो सोचते हैं कि झूठ बोलने से हमको सक्सेस मिलेगा, जीवन में सफलता मिलेगी, इनको बाद में पता पड़ेगा एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? बोलो. ये तो तुमको एक्सपीरियंस है. एक बार तुमने झूठ बोल दिया, अरे मैं गया था अपने फ्रेंड के यहाँ. अच्छा कौन से फ्रेंड के यहाँ गए थे? दूसरे का नाम बताओ, वो भी झूठ. उसके बाद मतलब कितने बजे गए थे? तो वो भी झूठ. उसके बाद अरे वो तो फ्रेंड यहाँ तुम्हारा आके गया था, ओ अच्छा आके गया, तो दूसरा फ्रेंड. फिर झूठ बोलो. तो एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है? 10 झूठ बोलना पड़ता है. और बाद में पकड़ में तो आ ही जाता है. पकड़ में जाता मुंह छोटा हो जाता है. और उसके बाद में लोगों तुम्हारे ऊपर रिलायंस रहेगा नहीं, लोग तुम्हारे पर कभी विश्वास नहीं करेंगे. बाद में तुम सच बोलोगे तो भी वो मानेंगे नहीं. एक लड़का था ना, बाघ आया बाघ आया बाघ आया, है ना, भालू आया भालू आया भालू आया, और सचमुच में भालू आया तो कोई बचाने आया नहीं. क्यों? लोगों ने छोड़ा, ये तो झूठ बोलने वाला है. लोगों ने सोचा झूठ बोलने वाला है. तो लोग, तुम किसके ऊपर डिपेंड करोगे? जो झूठ बोलने वाला है उसको तुम उसके ऊपर डिपेंड करोगे ना जो सच बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करोगे? तो सच बोलना चाहिए ना झूठ बोलना चाहिए? नाउ लोग बराबर. Now there is a beautiful question. All are teasing me, so what can I do? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए?
प्रश्न, यही प्रश्न श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, यदि कोई मुझे मेरी निंदा करेगा या कोई चिढ़ाएगा, मैं ऐसा समझूंगा, अरे ये लोग तो कुत्ते हैं। अच्छा सुनो, श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे इतना अधिक नहीं, इतना अधिक मत करो, परंतु ये कहावत है, हाथी चले बाजार में कुत्ता भौंके हजार, साधु को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार। जब हाथी जाता है ना तो कुत्ते इतना भौंकते हैं, वो हाथी उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसी प्रकार से यदि हम सच्चे पथ पर हैं, हमको कोई चिढ़ाएगा, हमको चिढ़ना नहीं चाहिए, और चिढ़ोगे तो और ज्यादा चिढ़ाएंगे, और चुपचाप हंसते रहोगे तो वो लोग बेचारे हार जाएंगे। भगवान बुद्ध को क्या कहा, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दिया तो भगवान बुद्ध चुपचाप रहे, हंसते रहे, तो और चिढ़ गया जो सामने वाला गाली देने वाला है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा यदि कोई तुम्हारे घर आए और तुम उसको कुछ भेंट दो, यदि भेंट को स्वीकार न करे तो वो भेंट किसके पास रहेगी? बोले इसमें क्या हो, तो मेरे पास रहेगी। उसी प्रकार से हे भगवान, आपने मुझे गाली दिया, बहुत सारा गाली दिया, पर मैंने उसका स्वीकार नहीं किया, मैं गुस्सा नहीं हुआ, तो गाली किसके पास रही? तुम्हारे पास रही। तो इसलिए उपेक्षा करना चाहिए, उपेक्षा। डियर स्वामी जी, मुझे सवाल है, आजकल बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ लड़के लड़की चले जाते हैं और भाग जाते हैं, तो क्या जिंदगी भर यही चलता रहेगा और अपने माँ बाप की इज्जत बिगाड़ेंगे? क्या करें, जमाना बहुत बिगड़ गया। देखो एक बात मैं बताता हूं, ये सब हो रहा है, ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मीडिया। ये मीडिया में दिखाते ना, लड़के लड़की साथ में बहुत मजा किया, उसके बाद चले गए, फिर विलेन के साथ झगड़ा किया, ये किया, और अंत में हीरो हीरोइन बहुत खुशी में आनंद में आ गए, ऐसा सब सिनेमा में दिखाते हैं। और बच्चे लोग सोचते हैं हम भी सिनेमा के हीरो है और हीरोइन है, यही प्रॉब्लम है। वो जानते नहीं कि तुम हीरो नहीं हो, तुम विलियन हो, हीरो नहीं हो, तुम जीरो हो। यू आर नॉट हीरो, यू आर जीरो। तो अपने आप को हीरो मत समझो, और सामने वाली भी हीरोइन नहीं है। ये हम लोग पूरा फिल्म देखने के बाद उसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसी में हमारा दुख, हमको जीवन में दुख आता है। तो इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। ये जो प्रेम रोग है उसका एकमात्र इलाज है प्रेम योग। भगवान से प्रेम करो तो उसका भी पछतावा नहीं मिलेगा। Getting angry at even small reasons give a way to get rid of control. Yeah, beautiful question. How to control anger? क्रोध को कैसे काबू में लें? So there is a book you will get, How to Control Anger. उसके ऊपर पूरी किताब है, क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे करें। हिंदी में भी एक किताब है, अभी गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। बट आई विल गिव यू अ सिंपल रीजन। अच्छा, गुस्सा तो आता है ना, आता है, हम सबको आता है। कभी सोचा गुस्सा क्यों आता है? सोचा कभी? सोचा गुस्सा क्यों आता है, कब आता है? मैं बता दूं गुस्सा कब आता है? मैंने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए गुस्सा आया। ठीक है, याद करो, मैंने कहा था पापा को 700 रुपए के जूते लाना, क्यों 300 रुपए के लाए? गुस्सा आया। और छोटे भाई को बोला था मेरे पास में मत आना पढ़ाई के समय, क्यों आया? इसलिए गुस्सा आया। कहने का मतलब मैंने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ तो गुस्सा आया। कहने का मतलब दो चीज है, एक तो मेरा अहंकार, ए भाई પછી ઝઘડજે ને બાપા,
પછી એટલો ટાઈમ તને મળશે ઝઘડવા માટે, હમણાં હું પૂરું કરીને જઈશ, પછી આ પ્રશ્નો આટલા બધા રહી જશે. નહીં તો તમે લોકો ઝઘડતા રહેજો ને, પછી આટલો ટાઈમ આખી જિંદગી છે તમારો ઝઘડવા માટે. तो मैंने जो सा सोचा था ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा आया. इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं होगा, है ना. हम जैसा सोचते ऐसा नहीं होगा. होता क्या है? होता वही है जो मंजूर है, होता वही है मंजूर है. ये तो बात तुमने सोचा है. बंदा लाख चाहे क्या होता है, होता वही जो मंजूर है. इसलिए याद रखना चाहिए. पर इसका मतलब नहीं अच्छा खुदा की मर्जी होगी तो पास होंगे, अभी मजा करो ऐसा नहीं. तो इसलिए तुमको सबको जिसको गुस्सा आता है अपने नोटबुक में लिख लो फॉर्मूला, हाउ टू कंट्रोल एंगर. फॉर्मूला लिख लो, ये बड़े अक्षर में अपनी दीवार पर टिंगा देना. और डिप्रेशन भी आएगा तो भी ये फॉर्मूला है, एंगर आएगा, क्रोध आएगा तो भी ये फॉर्मूला है. द फॉर्मूला इज दिस: डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. LEAV, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. अपना जितना हो सके काम करना, पर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. फल किसके हाथ में? भगवान के हाथ में. कर्म किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त अकर्मणि. हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है. इसलिए तू तेरा कर्म कर, फल मैं दूंगा. पर फल अवश्य अच्छा देंगे यदि तुम अच्छा काम करोगे. तो ये इक्वेशन लिख लिया. और हाउ टू कंट्रोल एंगर. यदि एंगर आ जाए तो 10 बार ओम 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 मन में रिपीट करना. देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा. और स्वामी विवेकानंद का एक फोटो यहां से ले लो, एक फोटो मिलेगा, है फोटो सबको देने के लिए नीला है. तो स्वामी विवेकानंद का फोटो एक खरीद लेना, उसको पॉकेट में रखना और फोटो की ओर देखना. 5 रुपए में मिलेगा बढ़िया प्लास्टिक का फोटो, वो तो है ना, वो बढ़िया 5 रुपए प्लास्टिक का फोटो मिलेगा, उसको पॉकेट में रखना. जैसे ही गुस्सा आ रहा होगा स्वामी जी की ओर देखना और ओम ओम 10 बार बोलना. देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा. હું ભણવામાં હોશિયાર છું, તેમજ મારો આત્મવિશ્વાસ પણ સારો છે, પરંતુ ક્યારેક કોઈ મને અણગમતું કહી જાય તો મને ઘણું લાગી આવે છે, મને પછી માનસિક રીતે ડિસ્ટર્બ થઈ જાઉં છું. તો તેના માટે ઉપાય જણાવશો. એનો અર્થ શું છે કે તમે બહુ લાગણીશીલ છો. વધારે પડતું લાગણીશીલ નહીં થવાનું, થોડી સહન કરવાની શક્તિ કેળવવાની. માં શારદા દેવી કહેતા સહન કરો, સહન કરો. જીવનમાં કેટલી બધી વસ્તુઓ આવશે જે સહન કરવી પડશે. એટલા માટે પ્રેમથી, આનંદથી, હસતા હસતા બધું સહન કરવું પડશે. અને કોણ શું કહે છે શું ને એના પર વધારે ધ્યાન નહીં દેવાનું. હમણાં જ કીધું ને, હાથી ચલે બાજાર में कुत्ता भौंके જાય. કોણ શું કહે છે એના પર વધારે ધ્યાન નહીં દેવાનું. હા, જો કોઈ ખરાબ વાત હોય, આપણે કંઈ કર્યું હોય, એને માટે માફી માંગી લેવાની, પરંતુ વધારે ડિસ્ટર્બ નહીં થવાનું. યુ હેવ ટુ બી વેરી સ્ટ્રોંગ, મેન્ટલી વેરી સ્ટ્રોંગ. માનસિક રીતે તમારે બહુ સ્ટ્રોંગ થવું જોઈએ, જેથી તમારા મૂડ ઓફ ન થઈ જાય. અને માનસિક રીતે સ્ટ્રોંગ થવા માટે માનસિક શક્તિ જોઈએ. એ માનસિક શક્તિ તમને મળશે 4 ઉપાય દ્વારા: પ્રાર્થના, ध्यान, निष्काम कर्म, निस्वार्थ सेवा, અને ચોથું છે સારા સારા પુસ્તકો વાંચીને પોઝિટિવ થિંકિંગ. આ 4 દ્વારા તમે તમારું EQ, ઇમોશનલ કોશન્ટ વધારી શકશો. EQ વધશે તો તમારો આ જે ભાવનામાં તમે વહી જાઓ છો, લાગણીશીલ બનો છો, એના પર તમારો કંટ્રોલ થઈ જશે. ટાઈમ ટેબલ બનાવીએ તો છીએ પણ એ ફોલો નહીં થતું. આ બધાનો આ ટાઈમ ટેબલ બહુ સરસ બનાવે છે પણ ફોલો નથી થતું. એટલા માટે મેં કીધું એવો ટાઈમ ટેબલ બનાવો જેનું પાલન તમારા માટે શક્ય છે. પ્રેક્ટિકેબલ ટાઈમ ટેબલ બનાવો. અને છતાંય તમે પૂરું પાલન ન કરી શકો, કાંઈ નહીં, રવિવારનું ટાઈમ ટેબલ અલગ બનાવો, નવું ટાઈમ ટેબલ બનાવો. એ પણ પાલન ન થાય, બીજું એક ટાઈમ ટેબલ બનાવો, પણ ટાઈમ ટેબલ બનાવો. અને એના પ્રમાણે ભલે 50% તો 50% તો મેં તમારે સફળ થયા. સમથિંગ ઇઝ બેટર દેન નથિંગ. પણ ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનું બંધ નહીં કરવાનું, એના ઉપર પ્રયત્ન કરવાનો, એનાથી ખૂબ ફાયદો થશે. અમે મનમાં જે કાર્ય કરવા ધારીએ છીએ તે કાર્ય લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા પહોંચતા અમારા વિચાર બદલાઈ જાય છે. તેનું કારણ શું?
અને તે નિવારણનો ઉપાય જણાવો. એનો અર્થ છે તમે જે કાર્ય પ્રારંભ કરો છો વિચારીને કરતા નથી. પહેલા તમે સારા નરસાનો વિચાર કરો, એનાલિસિસ કરો કે આ કાર્ય મારે કરવાનું છે, એમાં શું ફાયદો થશે, શું નુકસાન થશે, લખીને રાખો અને પછી દ્રઢ નિર્ણય કરો આ કામ મારે આટલા સમયમાં કરવાનું છે. એ કામ પતી જાય પછી હું બીજું કામ ઉપાડીશ. એના માટે તમારું પ્લાનિંગ કરતા પહેલા એના સારા નરસાના તમારે પોઈન્ટ લખી લેવા પડે અને તમારું માઇન્ડ ક્લિયર કરી લેવું પડે. અહીં જે સ્વામી વિવેકાનંદનો ફોટો છે તે બધા જ ફોટા આપણા તરફ નથી જોતા. એનો સંદેશો શું છે? કેમ, કોણે કીધું? આ બધા ફોટા કઈ તમારા તરફ જોઈએ છે? જુઓ ને, જો એક ફોટો તમારી તરફ જોઈએ, જો તમે બધા ફોટા તમે જોશો એમાં ક્યારેક સ્વામીજી તમારા તરફ જોઈ રહ્યા છે એમ લાગશે. જ્યારે નથી જોતા એનો અર્થ છે કે તમે કઈ ખરાબ કામ કર્યું હશે એટલે તમારા તરફ નથી જોતા. પણ જો તમે સારું કામ કર્યું હશે સ્વામીજી તમારા તરફ સરસથી જોશે અને તમારા પર આશીર્વાદ વરસાવશે. પછી હમણાં નહીં પછી જોજો, હમણાં બેસી જાઓ, પછી છેલ્લે જોજો અહીંયાથી જતી વખતે. બધા કહે છે કે આપણે ધ્યેય નક્કી કરવો જોઈએ, જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ. તો આ લક્ષ્ય કઈ રીતે નક્કી કરવું તેવું જણાવવાનું મને બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, वेरी नाइस क्वेश्चन कि जीवन નું લક્ષ્ય કેવી રીતે નક્કી કરું. તો मैं हिंदी में बताता हूं. अच्छा, गुजराती બધાને સમજી તો શકાય છે ને? ના, anybody having difficulty in understanding Gujarati? Gujarati, somebody, all at least you can understand. તો આમાં ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે લક્ષ્ય શું છે. તો સ્વામી વિવેકાનંદે આનો બહુ સરસ ઉત્તર આપ્યો છે. Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but second in detail. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં દિવ્યતા સુસુપ્તપણે રહેલી છે. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? અંતર્નિહિત આ દિવ્યતાને અભિવ્યક્ત કરવી. કેવી રીતે? બાહ્ય અને અંતર પ્રકૃતિને વશીભૂત કરવી. એ કેવી રીતે થાય? 4 ઉપાય છે. જ્ઞાન યોગ, સારા પુસ્તક વાંચન. ભક્તિ યોગ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની. રાજયોગ, ધ્યાન કરવાનું. અને કર્મ યોગ, જે કઈ કર્મ છે નિષ્ઠાપૂર્વક કરવાનું, નિસ્વાર્થ સેવા કરવાની. આ 4 યોગોના સમન્વય દ્વારા આપણા જીવનમાં જે આપણા મનમાં જે આત્મા છે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો અને અંતરમાં જે અનંત શક્તિ છે એને જાગૃત કરવી, એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. એનાથી આપણે અનંત સુખ, અનંત શાંતિ અને અનંત આનંદ મળશે. એની સાચી, એની બધી વિસ્તારની વાત હું સાંજના કહીશ. સ્વામીજી, હું જ્યારે પણ ભણવા બેસું છું તો મને બધું જ આવડે છે, પણ બીજે દિવસે યાદ કરું છું તો બધું જ ભૂલી જાઉં છું. आगे पाठ पीछे सपाट. એનો અર્થ શું છે? એનો અર્થ એ છે કે આપણે ભણીએ તો છીએ પણ એકાગ્ર તો પર ભણતા નથી. એટલે પહેલી વાર તો એકાગ્ર ભણવાનું, બીજું લખીને ભણવાનું. એક પુસ્તક તમને આજે મળશે, સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ. એમાં તમને સૌથી છેલ્લે આપેલું છે ભણવાના સૂચનો. એ ભણવાના સૂચનો પ્રમાણે તમે ભણશો તો અવશ્ય તમને બધું યાદ રહેશે. લખીને ભણવાનું, નોટ કરવાનું, એકાગ્રતા પર ભણવાનું, તો બધું પરીક્ષાને પણ 3 વાર રિવિઝન કરવું પડે. 3 વાર રિવિઝન કરવું પડે. એ તો સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ થઈ જશે. પછી તો કોન્ક્રીટનું મકાન હશે તો પડશે નહીં, કાચું મકાન હશે તો પડી જશે. એવી રીતે તમે જે કંઈ વાંચો પોતાના હાથમાં એની નોટ બનાવો અને આ નોટને 3 વાર વાંચશો. પરીક્ષાના દિવસે પણ એ નોટ વાંચશો તો તમને પરીક્ષાના દિવસે પણ યાદ રહેશે, અવશ્ય યાદ રહેશે. Sir, I want to ask you how we can maintain the electric shock for a long time. Like today you gave an interesting and energy speech, but how we can maintain it? Beautiful question. Beautiful question. Now, how many of you are having mobile? Mobile કોની પાસે છે? લગભગ બધાની પાસે છે. ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. અચ્છા, મોબાઈલમાં if you have got a mobile, I do not want, but now you keep it under silent mode, number 1. Number 2, every day night what do you do? रात को क्या करते हो? Every night what you do? If you want to send SMS, what you do every day night, you recharge the battery, isn't it? है ना?
रात को बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक प्लग में डालते हो ना प्लग को, और नहीं डालोगे तो क्या होगा, बैटरी डाउन होगी। बैटरी डाउन होगी तो एसएमएस नहीं जाएगा। तो एसएमएस भेजना है, बातचीत करनी है फ्रेंड के साथ, उसके लिए पहले मोबाइल की बैटरी को रोज रात को चार्ज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी मेंटल बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए तुमको एक बड़ा उपाय अच्छा बताता हूं। रात को जब मोबाइल को बैटरी चार्ज करने के लिए डालोगे प्लग में, तो ये बैटरी को रिचार्ज करने के बाय द टाइम वो आधा घंटा 15 मिनट तो लगेगा रिचार्ज में, तब तक तुम स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की किताब का इलेक्ट्रिक शॉक तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तो तुम्हारी मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। जब तक तुम्हारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तब तक मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। अच्छा उपाय है। इज इट ए गुड थिंग है? अच्छा उपाय है तो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो आई हैव गिवन यू द इक्वेशन, गिवन यू द मेथड। ट्राई टू रिचार्ज योर मोबाइल बैटरी एवरी डे। मान लो किसी के पास मोबाइल है, इसका मतलब भाई आपने तो कहा था जिसको मोबाइल हो, अब मोबाइल हमारे पास नहीं तो हम स्वामी जी किताब क्यों पढ़े? ऐसा नहीं, ये मेंटल बैटरी रिचार्ज करना है, मोबाइल हो या ना हो। पर जिनके पास मोबाइल है उसको तो करना ही है, और जिनके पास मोबाइल है उसको भी करना है। एवरीबडी हैज गॉट मेंटल बैटरी, उसको रिचार्ज करने के लिए रोज स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, उसे मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। Sir, it is the problem of today. Actually, I lost my one precious friend. I am unable to tell her sorry as I need a lot of anger on her. So please guide me on a right path ahead. Very nice question. Don't worry. If you have made a mistake, if you have done something wrong to her, don't worry. Today, don't do anything because today she will not be in a good condition. But after 2 days, 3 days, her anger will come down. At that time you say sorry and you ask for forgiveness and give a nice chocolate and maybe a rose and start again your friendship. Okay? If we have committed a sin and we know that, and for that we feel guilty, so what we should do so that we can overcome that problem? Very nice question. Remember, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, गई गुजरी भूली जाओ। ये થઈ ગયું भूल जाओ। कोई पाप तुमने किया, कोई मिस्टेक किया, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे माफ करो, अब मैं नहीं करूंगा। बट डोंट ड्वेल ऑन इट। हो गया तो हो गया, सबसे मिस्टेक होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज गॉट सम कमिट सम मिस्टेक। डोंट वरी अबाउट दैट, उसको भूल जाओ। पर अब याद रखना, नाउ बी केयरफुल, डोंट रिपीट द मिस्टेक। बंगला में एक बहुत अच्छी कहावत है कि वो देखे सीखे, कि वो ठेके सीखे, कि वो ठेके वो ना सीखे। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग है ना दूसरों के एग्जाम्पल से सीख जाते हैं, देख करके सीखते, भाई यहाँ ठोकर है, यहाँ इस रास्ते नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं जरा जाके देखे तो सही कितना लगता है, और फिर जाते हैं बहुत लगता है, नहीं अभी नहीं जाऊंगा। और कितने लोग हैं बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार उसी रास्ते से जाते हैं। 3 मेथड, 3 प्रोसेस होते हैं। देखे सीखे, देख करके सीखना, ठेके सीखे, ठोकर खा के सीखना, और तीसरा है ठोकर खा के नहीं सीखना। विच कैटेगरी यू वांट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? तो हमेशा ये जो वेस्टर्न यूथ है वो लोग कुएं में गिर रहे हैं, उसको देख करके आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमको सावधान होना पड़ेगा, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को लेना पड़ेगा, so that we don't have suffering in life। पहले बनो, और कभी कभी ठोकर लग गई उससे सीख जाओ, नहीं अभी अब नहीं करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कितने लोग अरे मैंने ऐसा हो गया, ऐसा महीना हो गया, दिन रात होते रहते, नहीं, स्वामी जी का उसको भूल जाओ। आई नेवर हेड ए काउ टेल ए लाई, बट इट इज ऑलवेज ए काउ एंड नेवर ए मैन। कभी तुमने देखा किसी गाय को झूठ बोलते? देखा कोई गाय झूठ बोलती है? अरे कहां से बोलेगी, बोल ही नहीं सकते, झूठ कहां से बोलेगी? उसी प्रकार स्वामी ने कहा मनुष्य आज झूठ बोलता है, कल सच बोलेगा, क्योंकि वो बोल सकता है। आज मिस्टेक करता है तो कल ठीक ही हो जाएगा, कल महान हो जाएगा। So don't worry. I never had a cow tell a lie, but it is always a cow and never a man. Hold the idea 1,000 times, and if you fail 1,000 times, make the attempt once more. 1000 बार तुम गिरोगे, 1000 बार उठोगे, 1000 गलती करोगे, फिर से उठोगे, और 1000 बार फेलियर मिले, again you try,
ट्राई ट्राई ट्राई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हो गया तो हो गया, बीतीता है विसार दे, आगे की सुध ले। I am a non-vegetarian and I have a family background of the same. I always get afraid when I eat whether I will be supported by God or whether I shall be punished. My mind state gets disturbed due to this. How should I concentrate? Very good question. If you feel that you are not comfortable with non-vegetarian food, you should leave it. Now many people now are telling that vegetarian food is more important for our health. Non-vegetarian food that gives lot of cholesterol and other problems. So for health reason also you should try to avoid non-vegetarian food. But it has got nothing to do with God. God is not seeing what food you are taking. My dear friend, God is not seeing what food you are taking. God is not seeing what dress you are wearing. God is seeing what type of person you are. That is more important. If you are speaking truth, if you are having good character, if you are speaking truth, if you are honest and you are serving others, then you are more saintly than a person who is taking only grass but telling a lie, who is taking only grass but telling and making others fool. No. So that is character is the most important thing. What you are is more important than what you eat or what you wear. तुमने कैसा ड्रेस पहना है वो महत्व का नहीं है, क्या खाते हो या महत्व का नहीं। हाँ, और सुबह मैंने कहा था जैसा आहार होगा ऐसा हमारा मन हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन एकाग्र होगा, इसलिए शुद्ध आहार लेना चाहिए, उसकी बात मैंने कही थी। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान तुम्हारा मन देखते हैं, तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, तुम्हारा आहार नहीं देखते, भगवान हमारा मन देखते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना, बहुत बढ़िया एक भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन ही तुम्हारा दर्पण है और अच्छे बुरे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये याद रखना, मन ज्यादा जरूरी है। मन शुद्ध होगा तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। मुश्केलीમાં ભગવાનનો અહેસાસ કેમ નથી થતો? એટલા માટે નથી થતો કે તમે લોકો એમ માનો છો કે જેટલું દુઃખ આવે છે ભગવાન આપે છે। અરે દુઃખ આપણે ભગવાન નથી આપતા, ભગવાન તો નિરપેક્ષ બેઠા છે। આપણા પોતાના કર્મોને કારણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ અને પછી આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાનનો દોષ આપીએ છીએ, ભગવાને મને આટલું દુઃખ આપ્યું। એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ બહુ સુંદર વાર્તા કહેતા। એક માણસ હતો, માળી હતો, એનો બહુ સુંદર બગીચો હતો, બહુ સુંદર બગીચો હતો। એક દિવસ એક ગાય આવીને ઝાડ ખાઈ ગઈ અને એને બહુ ગુસ્સો આવ્યો, લાકડી પડીને ધમાધમ એને મારી। ગાયને એટલી મારી ગાય મરી ગઈ। હવે એને મનમાં દુઃખ થયું, અરે એને મનમાં ધ્રાસકો પડ્યો, અરે આ તો મેં ગો હત્યાનું પાપ મને લાગશે। ત્યાં તો ગો હત્યાનું પાપ આવ્યું, આવીને એના સામે ક્યાં ગાય તે મારી નાખી, હવે હું ગો હત્યાનું પાપ છું, હું તારી સામે આવું છું, તારા માથા પર જઈશ। ત્યારે એને વિચાર કર્યો મારી છૂટવું કેવી રીતે? એટલે મનમાં વિચાર કર્યો મેં તો નથી મારી, મારા હાથે મારી છે, અને હાથના દેવતા તો ઇન્દ્ર છે, આંખના દેવતા સૂર્ય છે, એમ હાથના દેવતા ઇન્દ્ર છે। એટલે કીધું મેં ગાયને નથી મારી, આ તો ઇન્દ્ર દેવતાએ મારી। એટલે ગાયનું પાપ ગયું ત્યાં ઇન્દ્ર દેવતા કે તે ગાય મારી, એટલે ભાઈ મારું હું શું કરે ગાયને મારવા જાઉં? ના, પેલા માળીએ કીધું કે તમે આ ગાયને મારી છે। એટલે ઇન્દ્ર દેવતા આવ્યા, વેશ પરિવર્તન કરીને આવ્યા અને આવીને કીધું પેલા માળીને, અચ્છા આટલો સુંદર બગીચો કોણે બનાવ્યો? મેં બનાવ્યો। અરે આ ઝાડ કોણે નાખ્યું? મેં નાખ્યું। આ છોડ, અરે એ તો હું ફોરેનથી લાવ્યો, બહુ સરસ। આ કોણે બનાવ્યો? મેં બનાવ્યો। આખો બગીચો જોયો, મેં કર્યું। છેલ્લે કીધું અરે આ તો ગાય મરી ગઈ છે, કોણે મારી? તો કે ઇન્દ્ર દેવતા મારી। ત્યારે ઇન્દ્ર દેવતા પ્રગટ થયા, વાહ રે વાહ, બગીચો બનાવ્યો તે ત્યારે તો ન કીધું આ હાથે બનાવ્યો એટલે ઇન્દ્ર દેવતા બનાવ્યો, અને ગાય મારી મેં। એવી રીતે આપણે શું કહીએ છીએ? મારા જીવનમાં પહેલો નંબર આવ્યો મારે કારણે, પરીક્ષામાં સફળતા મારે કારણે, મેં કહ્યું। અને જ્યારે જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, ભગવાન કેટલા નિષ્ઠુર છે, મને આટલી બધી આવી અસફળતા। ગાય કોને મારી? ઇન્દ્રે। બગીચો બનાવ્યો મેં। એટલા માટે આપણે ભગવાનને નિષ્ઠુર સમજીએ છીએ। જો ખરેખર આપણા ભક્તિ હોય નરસિંહ મહેતાની જેમ કે જે કંઈ કરે છે ભગવાન કરે છે તો બરાબર છે, એવી નરસિંહ મહેતાની ભક્તિ હોય આ જે કંઈ કરે છે। પણ જો એવું હશે તો તમને ગમે એટલું દુઃખ થશે, દુઃખ લાગશે નહીં। એની પત્ની મરી ગઈ, એમણે શું થયું?
મરું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે સમરશું શ્રી ગોપાલ. અને તમારે ત્યાં કોઈ મરી જાય તો હાય હાય ભગવાન કેવા નિષ્ઠુર છે. તો સાચા ભક્ત બનવા માટે તમારે બધું જોવું પડે. મને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, નો વિશ્વાસ તો કાંઈ નહીં, તમારે પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખો. સ્વામી વિવેકાનંદને મનમાં પણ વિશ્વાસ નતો. કોણે જોયા છે ભગવાન? બધાને પ્રશ્ન પૂછતા, તમે ભગવાન જોયા? પોતે જોયા? તો હું વિશ્વાસ કરું. આમ બધાને પૂછતા, કોઈ એનો જવાબ નહોતા આપી શકતા. પછી એક દિવસે कॉलेज में गया था. जब कॉलेज में गए थे उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विलियम हेस्टी, प्रिंसिपल, वो आए थे क्लास लेने के लिए. तो उन्होंने एक्सकर्शन नाम की कविता पढ़ा रहे थे, उसमें से समाधि वर्णन है. तो सब स्टूडेंट ने पूछा से समाधि होती है? बोले हाँ. रामकृष्ण परमहंस रहते दक्षिणेश्वर में, उनके पास जाओ, उनको समाधि होती है. वहां जाकर के गए, थोड़ी देर बातचीत किया, फिर बोले अच्छा, उन्होंने जो प्रश्न पूछते थे वही प्रश्न पूछे. अच्छा, आप तो वो ईश्वर की बड़ी बातें बोलते हैं, आपने खुद ने ईश्वर को देखा? तो श्री रामकृष्ण पहली बार उनको संतोष बोले, हाँ बेटा, मैं पोते ईश्वरना दर्शन કર્યા છે. જેમ તને જોઉં છું એથી વધુ પ્રત્યક્ષ રૂપે એના દર્શન કરું છું. તું ચાહે તો તને પણ એના દર્શન કરાવી શકું છું, પણ તારે સાધના કરવી પડશે. આ છે વિજ્ઞાનનો ધર્મ. વિજ્ઞાન શું કહે છે? H2 + O2 = H2O. હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન મળીને પાણી બને. હા, હાઇડ્રોજન ગેસ છે, ઓક્સિજન ગેસ છે, કેવી રીતે પાણી બને? આ ભાઈ એમાં માનવાની વાત નથી. તમે લેબોરેટરીમાં આવો, હાઇડ્રોલિટિક પ્રોસેસ કરો અને પછી તમને પાણી ન મળે તો તમે કહેજો. એવી રીતે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે, મેં પોતે ઈશ્વરના દર્શન કર્યા છે. તમે ચાહો તો તમે પણ એના દર્શન કરી શકો, પણ લેબોરેટરીમાં આવવું પડશે, પ્રયોગશાળામાં આવીને પ્રયોગ કરવો પડશે. સ્વામી વિવેકાનંદે આ ચેલેન્જ સ્વીકાર કરી લીધી અને પોતે બહુ સાધના કરી. પછી એમને નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ થઈને ભગવાનના દર્શન થયા. પછી એમણે કીધું હા ભગવાન છે, પણ જ્યાં સુધી પુરાવો ન મળ્યો ત્યાં સુધી એમણે કહ્યું હું પુરાવા વગર માનીશ નહીં. આપણા યુગમાં સ્વામી વિવેકાનંદ આ બધું પુરવાર કરીને ગયા છે. હા, ઈશ્વર નામની વસ્તુ છે, આત્મા નામની વસ્તુ છે, અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ નામનો એક આત્મા છે, આપણા દરેકમાં છે. તો આ હંમેશા યાદ રાખવાનું, ઈશ્વર છે, આપણને એના દર્શન નથી થતા. કેમ કે અજ્ઞાનનો પડદો આવી ગયો છે, આપણા મનમાં અહંકાર છે. જ્યારે આપણું મન શુદ્ધ થશે તો આપણને પણ ભગવાનના દર્શન થશે. એના માટે આપણે મનને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. Do you think, Swamiji, that this education system is correct? No, I don't think so. In our education system, most important thing that Swami Vivekananda said, what we want is man-making education, character-building education. But what we are now doing is મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ, એ બલવાને બદલે રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. રાક્ષસ કોને કહેવાય? જે બીજાના માટે થોડાક પોતાના સ્વાર્થને માટે બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરીને નામ રાક્ષસ છે. આપણે બધા સ્વાર્થી બની રહ્યા છે. જાયન્ટ્સ, but selfish giants. એ સ્વામીજી નહોતા ચાલતા. I don't believe in God because of this reason. Will I suffer in future? No. Whether you believe in God or not, that is not important. Bhagwan Buddha said, do good and be good. તમે સારા બનો અને સારા કર્મો કરો તો તમને જીવનમાં ક્યારેય દુઃખ નહીં મળે. કેટલાક લોકો ભગવાનમાં પણ માને છે, સાથે સાથે ટેબલની નીચેથી રૂપિયા પણ લે છે. એ લોકોને જેલમાં જવું પડશે પાછળથી, આજે નહીં તો કાલે. એટલા માટે તમે શું કરો છો એ મહત્વનું છે. તમે કેટલી વાર મંદિર ગયા, મસ્જિદ ગયા, ગિરજાઘર ગયા, એ મહત્વ નથી. કેટલા લાંબા તિલક ચાણ્યા મહત્વ નથી. કેટલા ઉપવાસ કર્યા મહત્વ નથી. મુખ્ય વાત છે તમે જીવનમાં એ આધ્યાત્મિકતાને પાલન કર્યું કે નહીં. Which book is the most famous and inspiring book of Swami Vivekananda according to you? You see, now there are many books of Swami Vivekananda. For the students, there is a beautiful book, Swami Vivekananda, the friend of all. સહુના સ્વામી વિવેકાનંદ. સ્વામી વિવેકાનંદ જીવન ચરિત્ર પણ બહુ સારું છે. એક નાનકડું પુસ્તક તમને મળશે, શક્તિદાયી વિચાર, એકદમ પાવરફુલ. નાનકડું એટમ બોમ્બ જેવું છે. એટમ બોમ્બ નાનો પણ બહુ પાવરફુલ, વેરી પાવરફુલ. Similarly, English medium students will also get one book of Swami Vivekananda, personality development, and also another book on thoughts of power. So you will get these books, and some books are available here of Swami Vivekananda. બહુ સરસ ઇન્સ્પાયરિંગ બુક્સ તમને મળશે, એ તમે લોકો જરૂરથી જોજો. તમારી પાસે પૈસા ન હોય તો ચિંતા નહીં કરતા, તમારા ક્લાસ ટીચરને કહેશો, ક્લાસ ટીચર તમારું નામ લખશે અને પુસ્તકની પ્રાઇસ લખશે. તમે પછી આવતીકાલે પૈસા આપશો ત્યારે પણ લઈ જશો. અને આવતીકાલે પણ આ બુક સ્ટોલ રહેવાનો चाहिए, અહીંયા જ રહેશે. 12, 12:30, 1 વાગ્યા સુધી દરેક પીરિયડમાંથી એક પીરિયડ
તમારે અહીંયા આવવાનું છે અને એમાં તમારે એક્ઝિબિશન જવાનું છે સ્વામી વિવેકાનંદ લાઈફ એન્ડ ટીચિંગ. There will be an exhibition on Swami life and Swami Vivekanand life and teaching Swami Vivekanand. Today also you can see, tomorrow also you can see. Today also you can purchase the books, tomorrow also you can purchase the books. In the evening when you are coming with your parents, that time also you can purchase the books. But the more books you read, the better it will be. जितना किताब पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा. And there are so many other books, beautiful books are there. Which is the official site to know about Swami Vivekanand? Swami Vivekanand के बारे में बहुत सारी साइट है, बट हमारी बड़ौदा की साइट देखना हो www.rkmododra.com. लिखा है rkmododra.com. अच्छा, ये पुरानी वेबसाइट, अभी नया वेबसाइट है, इसमें नया पुराना वेबसाइट क्यों दिया पता नहीं. आई विल टेल यू नया वेबसाइट rkmododra.com. लिखो वेबसाइट का नाम www.rkmvododara.com. www.rkmvododara.com. हाँ ये rkmvododara.com. ये स्लैश वडोदरा निकाल दो, स्लैश वडोदरा नहीं है, स्लैश वडोदरा करने की जरूरत नहीं है, वो पुरानी वेबसाइट rkmvododara.com. ये स्लैश मत देना, डोंट गिव स्लैश. स्लैश देकर के SN दोगे तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी. rkmvododara.com/SN, S फॉर स्वामी, M फॉर निखिलेश्वरन. SN देने से मेरी पर्सनल वेबसाइट आएगी, उसमें मेरे आर्टिकल्स, मेरे सीडी सब आपको मिलेंगे. तो दो वेबसाइट याद रखना है, www.rkmvododara.com, दूसरी है rkmvododara.com/SN, नॉट स्लैश वडोदरा, /SN, S फॉर स्वामी, N फॉर निखिलेश्वरन. ये दो वेबसाइट देना है. I am not so rich that I could not study much, but I want to study. Please help me. Don't worry. For money, you will not be able to stop your education. You come to us, we will take care of it. There is a trust here also, and we will tell the company to help you. And there are banks available which will give you loan. But for the sake of money, your education will not stop. Don't worry. But you try to study as much as possible. हमारे घर में जब मम्मी पूछती है तब सब आता है, और जब परीक्षा देने बैठते तब कुछ नहीं लिख पाते, पूरा नहीं लिख पाते. तो ये तो प्रॉब्लम यही है कि तुमने एकाग्रता पूर्वक यदि पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे तो जब याद रहेगा. और कैसे पढ़ाई की सूचना वो बताया है. मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मुझे सब आता भी है. सब लोग मेरे संबंध में कहते हैं कि तुम आगे आ सकते हो, और मुझ में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है. इस नेगेटिव को कैसे दूर करूं? हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी? बाय पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. डेवलप PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. अवॉइड NMA, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड. व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? ये देखो, एक ग्लास है, उसमें दूध आधा भरा हुआ है, आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा खाली है. NMA वाला क्या बोलेगा? दूध आधा, ग्लास आधा खाली है. और PMA वाला क्या बोलेगा? दूध आधा, ग्लास आधा भरा हुआ है. तो उसी प्रकार से किसी को 60% मार्क्स मिला, अरे मुझे 60% मिला, मुझे तो 80% की आशा थी, मैं आत्महत्या करूंगा, ये है NMA. और मुझे 60% मिला, पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो मिला, अगले साल मेहनत करके 80% लूंगा, ये है पॉजिटिव. इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं रखना चाहिए. આજના વેસ્ટર્ન કન્ડિશન પર તમારું શું કહેવું છે? મોબાઈલ, લેપટોપનો ઉપયોગ અમારે કરવો જોઈએ કે નહીં? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. કરવો જોઈએ, પણ એનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ, દુરુપયોગ નહીં. સદુપયોગ કરો બરાબર છે, પણ કેટલીક વાર પછી આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ, એ બરાબર નથી. તમે આટલું ભણ્યા તો સન્યાસી કેમ બન્યા? સન્યાસી કોણ બને? કે જેને ભણતા લખતા ના આવડતું હોય, જિંદગીમાં કોઈ જાતનું નહીં મળ્યું હોય, કંઈક દુઃખ આવી પડ્યું હોય, હાલો ભાઈ સાધુ બની જાઓ.
અને સાધુનું કામ શું? રામ નામ જપના, પરાયા માલ અપના. એટલે ઘણા લોકોની એવી હોય છે કે સંન્યાસી કોણ બને કે જેને ઘરમાં જેને કાંઈ સક્સેસ ન મળ્યું. પણ સ્વામી વિવેકાનંદ સંન્યાસી હતા કે નહીં? અને સ્વામી વિવેકાનંદ જેવી એકાગ્રતા કોઈનામાં છે? એના જેવા હોશિયાર કોઈ છે? એ પણ કેટલા ભણેલા હતા એ વખતના જમાનામાં, કેટલા ભણેલા હતા, તેમ છતાં સંન્યાસી બન્યા. શા માટે? આત્મનો મોક્ષાર્થમ જગદહિતાય છે. પોતાના કલ્યાણ માટે, પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે અને જગતની સેવા માટે એમણે સંન્યાસ ધારણ કર્યો અને એમણે રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરી. અને અહીંયા જે ભણેલા હોય એને જ લે છે, ન ભણેલા તો નથી લેતા. મિનિમમ ગ્રેજ્યુએટ હોય. બહેનો માટે શારદા મઠ છે વલસાડમાં, જવું હોય તો એને પણ ગ્રેજ્યુએટ બનવું પડે પહેલા, પછી તમને લેશે, એમને નહીં લે. કેમ? અહીંયા તમારે રામ નામ જપના, પરાયા આપના નથી. કેટલું બધું તમારે કામ કરવું પડે. મોટી મોટી મારી કોલેजेस છે, સ્કૂલ છે, એમાં પ્રિન્સિપલ તરીકે રહેવું પડે. મોટી હોસ્પિટલ છે, કેટલા બધા કામ થાય છે, એ બધા તમારે મેનેજમેન્ટ કરવું પડે. એટલા માટે ભણેલા જ જોઈએ અમારે ત્યાં. દરેક વ્યક્તિ સારો મિત્ર શોધે તો ખરાબ માણસ સારો કે કેવી રીતે સારો કેવી રીતે બને? બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. આ તમારા મનની ધારણા જ ખોટી છે. તમે જો બીજાને સુધારવા જાશો તો તમે પણ ડૂબશો. પહેલા પોતાનું કરો, પછી બીજાનું કરજો. તમે જો બીજાને સુધારવા જાશો તો તમે ડૂબશો. માટે તમે સારા મિત્રો રાખો. અને કેટલાક લોકો કે હું તો એને સારો બનાવીશ અને પછી પોતે જ ખરાબ બની જાય એની સાથે. એટલા માટે તમે તમારી જાતને પહેલા સુધારો, પછી બીજાને સુધારો. I have got less marks and that is why my friends talk me less. I'll cover up my marks but still that is no mark. But how to make them sure about my ability? Don't show them, automatically they will understand. You try to concentrate on your study and when you will get success, they will start talking to you. How to get rid of social networking sites like Facebook? For the time being, you try to prevent yourself. When you grow up, when you go to colleges, you will go for the website. You see, again I am telling you, going to Facebook is not important, but making good use of it. By Facebook, you have to be very careful not to misuse it. That is most important. In India, Western style has come, give some message to you to get rid of it. As I told you, that Western models of this youth, that is, we have to try to avoid. Now, પેલા પુસ્તકોનો સેટ છે કે નહીં બેન? પુસ્તકોનો સેટ છે એ અહીંયા આપજો મને. મારા હાથેથી બધાને આપીશ એક એક સેટ. આઈ વિલ ગીવ વન. નાઉ I have given you almost most of the questions I have answered. Okay? હવે તડકો બહુ આવે છે એટલા માટે હું પ્રશ્નોત્તરી બંધ કરું છું. પણ તમને કહું છું, તમે અલગથી હું ઊભો રહીશ હજી પણ. अभी मैं प्रश्नोत्तरी बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां बहुत धूप आ रही है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. पर मैं अभी क्या करूंगा, इसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होगा मैं बुक स्टॉल के पास में बैठा रहूंगा. किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है उस समय पूछ सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं शाम को दे दूंगा. मन की शांति कैसे मिले, शाम को 6:30 बजे इसी जगह पर अपने माता पिता के साथ अवश्य आना. नंबर 3, ये जो वेबसाइट है उसमें हमारा ईमेल आईडी भी दिया. यहाँ भी ईमेल आईडी दिया. ये ईमेल आईडी है यहाँ पर rkmbmv1@gmail.com. इस पे अपने प्रश्न लिखना, मैं उत्तर दूंगा. ओके, दैट इज अनदर थिंग. इसके बाद भी कोई प्रश्न रहेगा. दूसरी बात है, कल सुबह आपको एक पीरियड मिलेगा. आज जो किताब मिलेगी उसको पढ़ना है और पढ़ करके परसों आपको एक पेज में लिखना है आज जो लेक्चर हुआ उसमें से क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा. क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2, जो किताब आपने बोला वो किताब आपने जो कल पढ़ेंगे उसमें से क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा. क्वेश्चन नंबर 3, कि आपने वो जो अच्छा लगा है उसको अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे. ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है परसों. और कल किताब पढ़ना है एक पीरियड. और कल पीरियड के पीरियड हर एक पीरियड में कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पर लाएंगे और बुक स्टॉल देखना है.
एग्जीबिशन देखना है, किताब खरीदना हो तो खरीदना है, अभी भी खरीद सकते हैं, शाम को भी खरीद सकते हैं, कल सुबह भी खरीद सकते हैं। कल दोपहर को 1 बजे हमारी बस यहाँ से बड़ौदा वापस चली जाएगी, फिर ये सब किताबें नहीं मिलेंगी। और अभी ये जो कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद मैं अपने हाथ से हर एक को किताब दूंगा, हर एक को, पर पहले तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम लोग ये किताब पढ़ोगे। प्रॉमिस? हाथ ऊंचा करो जो प्रॉमिस देता है। ठीक है, अच्छा, विथ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ बेस्ट विशेस आई विल गिव बुक फ्रॉम माय ओन हैंड्स, और उस किताब को पढ़ना है